In your last class, you have studied about the response to stimuli. In that, we have also studied about the two basic terms, two very important terms. These were phototropism and geotropism. Are you all aware of these two terms? Phototropism is what? The response of any plant towards the sunlight, that is the phototropism, and the response of any plant or movement of any plant part towards the earth, towards or away from earth, actually it is geotropism. So let me show you how you can actually check the phototropism in plants. You are having one such activity here with which you can check that how phototropism is shown by all the plants. What you have to do, you have to take two potted plants. दो plants लेने आपको and you have to keep one a little away from the window. एक विंडो के बिल्कुल पास में रखना है और एक विंडो से थोड़ा दूर रखना है. You have to keep one of them away from the window through which the sunlight is entering, and the other one you have to keep it on the windowsill. बिल्कुल उसको विंडो के पास में रखना है. And you have to water those plants daily. And after some days, you will observe that the plant which is kept away from the window, that doesn't grow upright. वो सीधा सीधा ऊपर की तरफ नहीं मूव करेगा. It will tilt itself towards the window to obtain the light. But the one which was kept at the windowsill, it grows straight as it is getting all the light from the window. The other one, जो विंडो से थोड़ा दूर रखा हुआ था, that is not getting all the light. So to get the light, it tilt itself towards the sunlight. This is what? This is the movement of the plant towards the sunlight, which is phototropism. So this is one such activity by which you can check how plants show the phototropism. That is, they move towards the sunlight. Next we are having the growth. Next characteristic of the living organisms is what? It is growth. Now what is growth? Growth is the gradual increase in the size of any organism. किसी भी organism की size में जो gradual increase हो रहा है, that is growth. Now you all know that all the living things, they take in nutrition and grow. जितने भी आपके organisms हैं, जितने भी living beings हैं, वो लेते हैं nutrition by the food they take. फूड के इनटेक से क्या लेते हैं? वो न्यूट्रिशन लेते हैं एंड दे ऑल ग्रो. यू ऑल ग्रो इन साइज. पहले एक छोटा बेबी होता है, बेबी से वो एक बड़ा बॉय बनता है, बॉय से यंग मैन बनता है, यंग मैन से ओल्ड मैन बनता है. उसकी एज इंक्रीज करती है, उसके साथ साथ हाइट भी इंक्रीज करती है. पहले बेबी बिल्कुल छोटा होता है, जो बॉय होता है उसकी हाइट मीडियम हो जाती है, फिर जब वो यंग हो जाता है उसकी हाइट प्रॉपर डेवलप हो जाती है. आफ्टर दैट इट स्टॉप्स. But this is what? This is the gradual increase in the size of an organism. This is growth. So all the organisms, they increase in height and they also increase in weight to exhibit this growth. Growth को exhibit करने के लिए क्या changes हो रहे हैं उनमें? Height में change हो रहा है, height increase कर रही है और height के साथ में weight भी increase करता है. So different organisms, they have different stages of growth in their lives. अलग अलग स्टेज हैं सबके. एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो फ्रॉम बर्थ टिल द डेथ. बर्थ से लेके डेथ तक उनके बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं और बॉडी ग्रो करती रहती है. ऑल्दो द हाइट इज वन सच थिंग विच स्टॉप्स एट वन पर्टिकुलर एज. एक एज पर जाकर आपकी हाइट इंक्रीज करना बंद हो जाती है, बट द बॉडीली चेंजेस दे आर स्टिल देयर फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ. नाउ दिस ग्रोथ इज व्हाट? This is an irreversible change. In the last chapter, you have studied about the reversible and the irreversible changes. In that chapter also, you studied about the growth. This is what? This is a kind of irreversible change. अगर आपकी height एक बार increase कर गई है, once you have grown, you cannot get back to your earlier stage. वापस उसी स्टेज में आप नहीं जा सकते. अगर आप छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे से आपकी हाइट बढ़कर आप यंग बन चुके हो, तो आप वापस से अपनी हाइट को कम नहीं कर सकते. दिस इज अ काइंड ऑफ natural thing and it is also a kind of irreversible change. In the plants also, you can see that the plants, they germinate from the seed. सबसे पहले क्या
छोटी चीज क्या है, सबसे पहले इनिशिएट कहाँ से होता है स्टेप? फ्रॉम द सीड्स. Seeds, they germinate and they grow into the plantlet, and the plantlet that grow into the bigger plants and ultimately they transform into the trees. ये भी क्या शो कर रहे हैं? ग्रोथ शो कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. You can see this in the animals also. The puppies, they grow into dogs. The human beings also, they grow from babies into the adults. So these are the organisms which are all showing this characteristic of growth. All the living things, they grow till the time they become mature. जब तक पूरी full maturity नहीं आ जाती आपकी body में, every organism till it become completely mature, his or her body grows. Here also you can see the concept of growth, how the plant is growing in size. जो plant है वो कैसे grow कर रहा है, अपनी height increase कर रही है उसकी. पहले वो एक seed है, seed germinate करके एक plantlet बनेगी, plantlet से वो एक छोटा plant बनेगा, ultimately it grows bigger and bigger, एक बड़ा plant बन जाएगा और plant से trees में भी transform हो जाते हैं बहुत सारे plants. So all the living organisms, they exhibit growth. But when we are talking about the non-living things, do they grow? No, they don't grow. But they can change their shape. They can be made to change their shape by the human activities. जो जितने भी non-living things हैं, अगर हम बाहर से कोई force apply करें या फिर कोई substance उसके अंदर add करें, it depends upon the type of substance which we are talking about. Material पर depend करता है, उसकी nature पर depend करता है. Whichever material we are talking about, उसकी qualities कैसी हैं, उसका nature कैसा है, उस पर depend करता है कि वो अपनी change कैसे कर रहा है shape. All the non-living things, they actually do not grow, but they can change their shape. जैसे अगर आप एक metal की बात करो, the metals, they can be made to change the shapes by beating. आप ज्वेलरीज खरीदते हो, गोल्ड की, सिल्वर की, उनमें कैसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं? शेप्स चेंज करके ही बनाए जाते हैं वो. यू कैन हैव अ राउंड मास ऑफ गोल्ड. आपके पास गोल्ड का या किसी और मेटल का एक राउंड मास है, अगर आप उसे बीट करते हो हैवीली तो क्या बन जाएगा? वो एक फ्लैट स्ट्रिप में भी कन्वर्ट हो सकता है. सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द शेप ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स. हाउएवर, द साइज ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग, it increases only if something is added from outside. कुछ substances ऐसे होते हैं जो अपनी size को ऐसे increase करते हैं by the amount. अगर हम बाहर से उसी जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, whichever material we are talking about, अगर उसी material को हम उसमें और add करते हैं, it grows bigger in size. और अगर उसमें से उस quantity को निकाल लेते हैं, if we subtract that quantity, it changes its size, it actually contracts in size. For example, if you are having a heap of sand, अगर आप उसमें और sand add कर दोगे तो क्या होगा? It will grow in size. But अगर उसमें से निकाल लोगे तो क्या होगा? उसकी height क्या हो जाएगी? Change हो जाएगी, उसकी shape भी change हो जाएगी और उसका size भी change हो जाएगा. So all the living things, they exhibit growth, they grow till they become mature, but all the non-living things, they actually do not grow, but they can change their shape and size whenever we apply some force or add something to it. Next characteristic is the movement. Now, when we are talking about the movement, we will be talking about the two concepts, about the locomotion and the movement. You all know that the living things, they show movement. जितनी भी living things हैं वो क्या करते हैं, एक place से दूसरी place में move करते हैं और वो movement ऐसे भी show करते हैं, like when we are talking about the human beings. Human beings अपने हाथों को move कर सकते हैं, अपने पैरों को move कर सकते हैं. We can move our hands, we can move our legs, we can move our tongue. These are all the movements. So all the animals, they also move in search of food or in search of shelter as well as to protect themselves from their enemies. जितने भी animals हैं वो एक place से दूसरी place पे move करते हैं in search of food, खाने की search में,
शेल्टर की सर्च में और अपने आप को उनके एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए. दिस इज द काइंड ऑफ मूवमेंट इन विच they are moving from one place to the other place. This is the kind of movement which is called as locomotion. ये कौन सा movement है? It is called locomotion. जहाँ पे the organism it is moving from one place to other place. This is the physical movement जहाँ पे change हो रही है, उसकी place ही change हो रही है. The organism is moving from one place to the other place. This is locomotion. And all the living beings, like the animals, the human beings, they show locomotion. All the living beings, मैं living beings की बात कर रही हूँ तो उसमें सिर्फ animals और human beings की बात कर रही हूँ. I am not talking about the plants. Plants, they do not move from their place. So the locomotion is shown by the animals and the human beings. But besides this locomotion, that is movement from one place to the other place, all the living beings, they also show the other movements. लोकोमोशन के अलावा बाकी मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट, मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स, यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स, यू मूव योर हेड व्हेन यू ब्रीथ इन एंड यू ब्रीथ आउट, योर मसल्स दे कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड. These are certain kind of movements, but we cannot discuss all these movements under the section of locomotion. Locomotion में हम लोग क्या बोल रहे हैं? We are simply saying that it is the kind of movement which is taking place when the organism is moving from one place to the other place. एक place से दूसरी place में उसकी क्या हो रही है? Displacement हो रही है. This is locomotion. But we are also having other kind of movements. Now there are also certain kind of living beings which do not move from one place to another. Like the plants, they do not move from one place to other. This is Hydra. It remains attached to the weeds in the pond water. जो pond water होता है उसके अंदर weeds हैं. Weeds are what? These are the unwanted plants which grow along with the wanted plants. जितने useful plants होते हैं उसके साथ में कुछ unwanted plants भी grow कर जाते हैं. These are all the weeds. जो Hydra है, let me show you the picture of Hydra. This is the sea Hydra. This one is the sea Hydra. इसके अंदर क्या होता है? Budding भी होती है इसमें. It attach like this. Weeds के ऊपर भी ये ऐसे अटैच होते हैं और हाइड्रा जो रिप्रोडक्शन शो करता है वो भी बडिंग की फॉर्म में होता है. एक बड निकलता है बाहर, वो ग्रो करता है and ultimately it detaches itself from the parent. Here you are having the sea anemone. It also doesn't move from one place to other. It attaches itself to the rock. जैसे सी हाइड्रा है वो वीड्स पे अटैच्ड रहता है, ऐसे ही सी एनिमोन इट गेट इटसेल्फ अटैच्ड टू द रॉक्स. रॉक्स के ऊपर ही अटैच्ड रहता है और वहीं पे अपनी मूवमेंट सिर्फ बॉडीली मूवमेंट्स करते हैं, बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. सो दीज एनिमल्स दे डू नॉट मूव फ्रॉम one place to the other place, but they are having the ability to move their body parts. अपने body parts को move कर सकते हैं while they are fixed at one place. एक place पर fixed रहते हुए अपनी bodily movements जो show करते हैं, these are called the movements. Locomotion क्या है? Locomotion is the movement of the organism from one place to the other, but the movement, it is the simple movement which is moving their body parts. They are not actually moving from one place to other, but they are moving their body parts. जो अपने body parts को move कर रहे हैं, this is the movement. Mostly all the plants, जितने भी plants की हम लोग बात करते हैं, they remain fixed at one place. वो एक ही place पर क्या रहते हैं? Fixed रहते हैं. They do not move from one place to the other. They do not show locomotion, but they show movement. Movement तो show करते हैं ना वो. Like the phototropism part. Phototropism में अभी जो हमने डिस्कस किया था, क्या बताया था वहां पे मैंने आपको? The plants, they tilt themselves towards the sunlight when they are kept away from it. अगर आपने sunlight उनको proper नहीं दी है, and plants, they are growing in size, they try to get the sunlight. So they tilt themselves towards the sunlight. This is also one kind of movement. Sunflower के बारे में आपको पता है. Sunflower क्या करता है? It faces the sun during the day. तभी खिला हुआ रहता है वो. And when the sun moves,
away, it simply shrinks. वो उस टाइम खिला हुआ नहीं रहता है. It actually faces the sun during the day. Now when we are talking about the plants, we all know that roots, they are having a tendency to move downwards, and the shoots, they are having the tendency to move upwards. जो plant है, it remain fixed at one place and show movement. What kind of movement? Roots क्या करती है? Downward direction में grow करती है. That means they are showing the movement. They are growing in size. And the shoot, it grows in the upward direction. वहाँ पे भी क्या हो रहा है? Size में increase हो रहा है. So it is a kind of movement. And opening and closing of stomata also. जो leaves होती हैं उसके अंदर stomata होता है. To get the carbon dioxide, the stomata, they open up and they remain closed. During the night they remain closed, and during the daytime they remain open to get the carbon dioxide from the atmosphere. So they also show movement. These are certain examples of the movement in the plants. So this was the movement of living beings. ये living beings के बारे में movement थी. अगर हम non living beings के बारे में बात करें, all the non living things, they do not show any movement. ना ही तो वो लोकोमोशन शो करते हैं और ना ही वो मूवमेंट शो करते हैं. They remain fixed at one place and they do not move on their own, but they can be moved by some external force. Neither they show locomotion nor they show movement on their own, but they can be moved by some external force. अगर बाहर से आप कोई force apply करते हो, they can be made to change their place. They can be made to move. जैसे for example, if you are having any chair, it will not move by itself until you push or pull it. जब तक आप उसे खींचोगे नहीं या उसे धक्का नहीं लगाओगे, it will not change its place. But when you apply the external force, it will be definitely displaced from the place. वो अपनी place जरूर change कर लेगी. अगर आप उसे खींचोगे तो भी उसकी place change होगी, और अगर उसको धक्का लगाओगे तो भी उसकी क्या होगी? Place change होगी. So this was all about the movement in the living and the non-living things. Thank you and have a good day.